अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ असेसमेंट। सबसे पहले जो टाइप है वो है प्लेसमेंट असेसमेंट। जैसे कि प्लेसमेंट का मतलब ही ये है कि एंट्री परफॉर्मेंस। हर इंस्टीट्यूट की अपनी एजुकेशनल पॉलिसी होती है और उसी के मुताबिक दाखिला दिया जाता है। जैसे कि अगर आप एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले एक टेस्ट होगा। ये प्लेसमेंट असेसमेंट की एग्जाम्पल हो सकती है। Placement assessment is concerned with the student's entry performance and typically focuses on questions such as the following. Does the student possess the knowledge and skills needed for the planned instruction? To what extent has the student already developed the understanding and skills that are the goals of the planned instruction? To what extent do the student's interest, work habits, and personality characteristics indicate that one mode of instruction might be better than another? सेकंड टाइप है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ की जाती है ताकि ये देखा जा सके कि स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेस हुई है कि नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ यूज टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. Its purpose is to provide continuous feedback to both student and teacher. It provides feedback to students and provides reinforcement for successful learning. It also identifies learning errors. It provides feedbacks to the teachers and also provides information for identifying instruction. It is useful in motivating student progress and learning errors. It is commonly used for assigning course grades. जो थर्ड टाइप है वह डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसको रेमेडियल एक्शन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। It identifies persistent or recurring learning difficulties. It provides detailed diagnosis and treatment. It involves the services of educational, psychological, and medical specialists. Its its aim is to determine causes of learning problems and plan remedial action. Clear? Summative assessment. ये टाइप ऑफ ये असेसमेंट की वो टाइप होती है जो कि कोर्स के एंड पर यूज़ की जाती है। Summative assessment comes at the end of the course of instruction. It determines the extent to which the instructional goals have been achieved. It is used primarily for assigning course grades or certifying students' mastery. The techniques that are used in summative assessment are achievement tests, rating scales, and portfolios. It provides information for judging the effectiveness of instruction. अगली जो टाइप है वो है नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट. Norm reference assessment, a test or other type of test designed to provide a measure of performance that is interpretable in terms of an individual standing in some known group. While a criterion reference test is a test or other type of assessment designed to provide a measure of performance that is interpretable in terms of clearly defined and determined domain learning task. इसको मैं आगे स्लाइड में मज़ीद क्लियर करूँगी. Purpose of these assessment: to find out the level of achievement, to know how good is the performance, to see how much has been learned, to describe what the students, employers, or others can do, to understand the complexity and difficulty of the effort required. Summary. So, to conclude, we can say that assessment is the process of collecting, synthesizing, and interpreting information to aid in decision making. It helps teacher understand learning, improve instruction, and make decision for betterment of student. मैं डिस्कस करूंगी कि डिफरेंस क्या है इन सारी टाइप्स में. प्लेसमेंट असेसमेंट डन बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगेन्स. इसका पर्पस क्या होता है? टू डिटरमिन स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्किल्स एंड प्लेस देम एट द अप्रोप्रिएट लेवल. क्लियर. फॉर्मेटिव असेसमेंट डन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. इसका पर्पस क्या होता है? टू मॉनिटर लर्निंग, प्रोवाइड फीडबैक एंड इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग. Summative assessment done at the end of instruction. इसका पर्पस क्या होता है? टू वैल्यूएट ओवरऑल लर्निंग एंड डिटरमिन द लेवल ऑफ अचीवमेंट. डायग्नोस्टिक असेसमेंट डन टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. क्लियर. इसका पर्पस क्या होता है? टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्लान टारगेटेड सपोर्ट. क्लियर. अब है जी नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट. कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स. फोकस क्या होगा इसका जी? हाउ अ स्टूडेंट परफॉर्म्स इन कंपैरिजन
टू ए ग्रुप। इसी एग्जाम्पल हम यूँ ले सकते हैं कि परसेंटाइल रैंक हो गई, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गए, सेट, आईक्यू टेस्ट, ये नॉन रेफरेंस असेसमेंट की एग्जाम्पल हैं। जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में we can compare a student performance to a fixed set of criteria or standard। फोकस क्या होता है इसका, हाउ वेल स्टूडेंट मीट स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स और क्राइटेरिया। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, यूनिट टेस्ट, रूब्रिक, कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि हम टेस्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। थैंक यू।